एलजी का वॉशिंग मशीन है जो पानी बाहर नहीं निकल रहा है। 4 दिन हो रहे हैं इसको पानी नहीं निकला। कस्टमर को बोला पानी नहीं निकल रहा, तो इसको ऑन करके देखा, स्पिन डाल के देखा, स्टार्ट करके देखा तो सही में पानी नहीं निकल। देखते अब इसको खोल कर। फिर तो मैंने उसको ऑन करके उसका जो पीछे का पैनल खोल के जब चेक किया तो जो हमारी ड्रेन मोटर है वो वर्क नहीं कर रही थी। यानी हमारा जो ड्रेन मोटर था वो ख़राब हो गया। ड्रेन मोटर फिर हमने वहाँ खोला और उसकी जगह पे हमने फिर नया वाला जो ड्रेन मोटर है वो लगा दिया। इसमें से जो एक स्क्रू था वो ख़राब हो चुका था तो खुल नहीं रहा था, तो हमारे को ड्रेन मोटर काट के निकालना पड़ा। आगे की वीडियो में आपको बताना है। वीडियो ऑन करने का है पानी। ये नया वाला ड्रेन मोटर है जो हमने सर्विस सेंटर से लेके आए। फिर हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं।